So we're going to start. We have radiation from a rapidly radiation from rapidly charge. So we have as of now taking dipole, how a radiating dipole produces an electromagnetic radiation, which has E and B components as such. And normally when we just generally हम जब लेते हैं इसमें हम normally we take velocity smaller than, and when we take relativistic corrections we can take higher order terms. Or if you want to have a simplest case, we ignore the higher order corrections and take the limiting case, which will somehow also जो हमारी classical calculation के साथ मेल बिठाएंगे. ठीक है? So the point is that if you want to have rapidly moving charges, you have to take into consideration those higher order terms, how they will pan out, how they will वो कैसे उनका क्या होगा ऑपरेशन से, उनका जो phonetic higher order interactions, how things will pan out और कैसे वो interactions include होंगे, which will take into consideration rapidly moving charges. तो rapidly means एक charge नॉर्मली हो रहा है, rapidly move हो रहा है. अब rapid कितना rapid, ठीक है? If it is rapid, comparable to the rapidity of velocity of light, ठीक है? तो that thing we are studying. But so we have to take into consideration the higher order corrections which we normally neglect. या for example Darwin term में हमने पहले दो term ली थी, higher order terms, ठीक है? So this is our engagement. So in the same way, so अब क्या करेंगे हम in a particular reference frame जो अगर particles की जो energy है which is normally given as 2/3 square C2 W2. You can see it here back in equation of 7.1 और basically ये है, ये जो है ये अगर in terms of electric dipole moment लिखेंगे तो ये है D है basically ER and D double dot को लिखेंगे as E double. ये basically यहाँ पर है dipole की energy, if you remember, is what equal to this. ठीक है? But here अगर ये इसके बराबर है dipole की energy, so what we are going to do is we are going to take for a radiation from a rapid moving charge. एक चार्ज मूव कर रहा है नॉर्मल dipole, एक हो गया कि at it moves with very fast rapid suddenly, but suddenly कितना suddenly, that is comparable to the velocity of light. In the previous calculations we have found like Darwin calculation only took terms up to second order, ठीक है? और we normally take V by C very less than 1. So if you want to take this phenomenon into consideration, we are going to also not ignore those higher order terms, ठीक है? Yes. That will help us explain radiation from a this is all. So if we take the general energy जो हमारी है dipole की, वो ऐसे भी है, where जो हमारा है ना dipole को है E R dot D dot, ये D double dot है, D double dot को हमें represent as E double, ठीक है? So that's it. This is the energy of the dipole moment. And अभी कह रहा है कि in system of reference the total radiated moment in dp is 0. Radiated moment 0 ये क्यों है? क्योंकि अगर closed surface है, अगर इसका symmetrical surface है, जितना यहाँ से radiate करेगा इतना पीछे से भी radiate करेगा, so that net closed volume में it will come out to be some constant, it will come out to be some, so that's why he is taking it as 0. Now अब ये है कि for the transformation of हमारे पास अगर for the transformation of arbitrary system, for the transformation of arbitrary reference मतलब कि अगर ये reference किसी भी reference frame में dipole है, dipole rapidly charged है, if it's not symmetrical, if it's not necessary कि ये जितना रेडिएट इस डायरेक्शन में करेगा इतना बैक फॉरवर्ड में करेगा, सो दैट नेट जब हम बाहर से देखेंगे रेडिएशन इट विल बी
constant or it will be zero. ठीक है, because the positive will cancel with negative, or it will be constant. ठीक है, वो भी वही होगा. अब ये है कि जो आर्बिट्री चार्ज है, आर्बिट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसमें हम if you remember हम 1 minus n dot b by c. n dot b by c क्या था? बेसिकली जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन का वेक्टर कंपोनेंट क्या था when it moves towards the source charge के हिसाब से. ठीक है, that factor into consideration. So you have to also take that component into consideration. If we don't see that the जो ट्रांसफॉर्मेशन वो for orbital charge है वो सिमेट्रिकल नहीं है अपने गिवन क्लोज सरफेस. ठीक है, तो अब अगर ये है कि रेडिएटेड फोर मोमेंटम किसके बराबर है? रेडिएटेड फोर मोमेंटम is can also be written as, if you remember अगर आप rewrite the formula 73.1 for example 73. हाँ, इस फॉर्मूला को अगर हम रीराइट करेंगे, we can also write it. Write energy in terms of this always how we can write momentum vector in terms of energy and vice versa. You have seen it in the when आप इसको देखना बुक पहले चैप्टर में 4 वेक्टर में एनर्जी वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का क्या रिलेशन है. ठीक है, और 4 वेक्टर में वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, एनर्जी कैसे लिखते हैं, एंड हाउ इन टर्म्स ऑफ नोटेशन ओनली. ठीक है, बिकॉज दैट विल हेल्प अस देयर एटलीस्ट इन नोटेशन. पहले नोटेशन क्लियर होगी फिर आगे बढ़ते हैं. तो इसी चीज को एनर्जी को अगर मोमेंटम में लिखेंगे वी कैन आल्सो राइट इट एज 4 मोमेंटम. वी कैन राइट इट एज or we can also write it as ये ना यहाँ UI ये है dx by ds कट जाएगा dx आता है. फोर मोमेंटम आप देखना कैसे UI मीन व्हाट इट्स dx by बेसिकली जो हमारा कोऑर्डिनेट है ना वहाँ dx by ds s इज बेसिकली c dt. तो उसमें जो because relativistic thing at a given point in time we also need time coordinates to specify it. c as well as c में है velocity relativistic velocity. तो वहाँ पर at every point we not only look at space coordinate we look at time coordinate also. So that is this notation UI is basically d s by dx. x को इधर तो c dt लिख सकते हैं. उसमें फिर हम उसको relativistic notation is embedded here because vertical charge particles moving at higher velocities. So इसका so this notation comes handy. तो ये notation करके हम इस एनर्जी को मोमेंटम फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. अगर ऐसे लिख सकते हैं तो then we can write it the same space components of the velocity are equal to 0. Then duk by ds will be equal to minus omega square by minus omega square by अब ये है कि space components of dvi are 0. And time components are given by 73.1. अब ये टोटल 4 मोमेंटम कैसे हम निकालेंगे? टोटल 4 मोमेंटम निकालेंगे इस चीज का मोमेंटम है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इन द एंटायर स्पेस. पहले हम लिखेंगे इन्फिनिटेसिमल मोमेंटम का which is basically this integral of 2 and over 4 momentums of this
न्यूटन सेकंड लॉ है ना, F इज इक्वल टू ma, है ना। जो फोर्स है राइट हैंड साइड में मास की वजह से, है ना। मगर यहाँ जो फोर्स एंड लेफ्ट राइट हैंड राइट साइड में क्या है, F mu क्या है, इस 4x4 मैट्रिक्स जो कंपोनेंट्स है E एंड B फील्ड्स की, रिप्रेजेंट F mu है, वो हमने निकल दिया था ना, E और B जो भी है 16 कंपोनेंट्स वाले, तो E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ रहा है राइट हैंड साइड, जो F इज इक्वल टू ma का एनालॉग है ना इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो ma यहाँ पर राइट साइड में है F mu, इसलिए भी आता है E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसलिए जो फोर्स जो फील्ड है वो किसकी वजह से, मास की वजह से नहीं है, वो चार्ज की वजह से, ई फील्ड से डी फील्ड से, नॉट ओनली ई फील्ड से डी फील्ड, उसके कंपोनेंट्स भी कैसे आएंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ ई एंड बी फील्ड्स कैसे आएगा, ठीक है। सो अब ये है कि इसको हम फर्दर हाउ वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एफ mu, we can write it as again go back to see equation of motion को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ऐसे कैसे लिखी, if you remember जब हमने equation of motion निकाला था लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ आप देखना again you just refresh your memory or you can look back to the book, you can write in terms of force momentum, we can write your left hand side, if you want to have a relationship of this second law with regard to F G B वाला, ठीक है। अब इस चीज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब इसके लिए भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके लिए भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सिर्फ इसमें फर्क ये है, यहाँ ऊपर ये है, यहाँ उसी हिसाब से F mu ये ऐसे है, देखो यहाँ C खाली है, यहाँ m स्क्वायर और C5 आ गया, तो हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर है m और C4, दैट विल कम फ्रॉम हियर, ये F J L U L F J L यहाँ पर है ना एक, देखो ये MC है ना, ये MC नीचे आएगा, ये आएगा MC स्क्वायर, एक की वजह से MC स्क्वायर आएगा, दूसरी की वजह से MC स्क्वायर आएगा, तो वो M स्क्वायर C स्क्वायर C4 अपना C5 आएगा from this. So if you do this thing, so this is this way. अब ये the time components of 73.4 and ठीक है, this the total value. अब ये again you have to do further, हम 4 momentum को in terms of 3 momentum भी लिखते थे, ठीक है। अब इसमें ये है कि we want to write momentum in terms of energy, momentum in terms of, so here this step इसको ये as a because I did not figure it out, ये पीछे ही होगा इसका logic, ठीक है। तो from this equation we can arrive at in terms of energy we can also write it as this, or we can do it tomorrow because I don't have time to हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका लॉजिक पीछे ही है, how we can write 4 momentum in terms of 3 momentum, just go and check out, ठीक है। वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आप ऐसे है, ये W जो है ये है एक्सेलरेशन, so यहाँ ये है एक्सेलरेशन ऑफ दैट डायरेक्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ द डायरेक्शन। अगर ये ऐसा है
फ्रॉम इफ यू रिलेट 4 वेक्टर नोटेशन में एनर्जी एंड मोमेंटम को कैसे हम रिलेट करते हैं, ठीक है, वी कैन अराइव एट दिस इक्वेशन। अगर दिस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है टोटल चार्ज सिस्टम में क्या है और कहाँ से इन सिस्टम, तो अब ये है कि अगर ऐसा है देन अगेन वी कैन जो है ना इसको हम फर्दर इन टर्म्स ऑफ लोरेंट्ज फोर्स है ना टोटल है ना F इज इक्वल टू है ना QE प्लस V क्रॉस B है ना, ऐसा है कि नहीं, यहाँ F की वजह से है ना ये MA A है ना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये M आएगा नीचे, तो अब ये एक्सेलरेशन है A यहाँ पर, ये A डॉट A है एक्सेलरेशन ऑफ डायपोल यहाँ पर, इसको हमने डबल के साथ रिप्रेजेंट। अब उसी एक्सेलरेशन को हम इन टर्म्स ऑफ विल टेक ऑल E fields and B fields, we can also represent it as like this। अब ये m है ना, यहाँ m नहीं हो, एक बार m आएगा दूसरी बार m आएगा है ना, m नहीं हो नीचे आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो इट्स E field plus 1 by C B cross H इस वजह से, and इसको B cross C B cross this can also be written as the whole momentum axis। अगर आप ऐसे है then what's the correct expression for the total radiative momentum differ by factor of extra factor of V in the integral, extra factor of V in the integral, extra factor of it's now the book says that it is clear from the formula 73.7. From this formula, the book says it's clear that जो एनर्जी रेडिएटेड है वो एसेंशियली इज प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर अगर इसको ऊपर लेंगे, जो एनर्जी रेडिएटेड है अगर इसको ऊपर लेंगे ये कह रहा है कि एसेंशियली जो है it's proportional to this factor 1 minus in a denominator, ऊपर कीजिएगा ये -1 आएगा, but y is not dependent upon this y is taken as constant, so that's so if you so he says that energy जो भी dipole की है when you integrate it out in the expression उसको ये अगर constant आएगा volume इसमें, तो it is more or less dependent upon this factor in the denominator। डिनोमिनेटर में फैक्टर है ना b by c, तो हमने स्टार्ट किया था कि जो क्लास हमने स्टार्ट किया था वी आर गोइंग टू स्टडी रेडिएशन फ्रॉम रैपिडली मूविंग चार्जेस इफ थिंग्स आर मूविंग इन आर्बिट्ररी रेफरेंस फ्रेम्स, सो वी हैव टू फैक्टर इन b by c का जो है रेशियो, सो इफ इट इज एट हायर वेलोसिटीज दैट विल टेक इनटू कंसीडरेशन, एंड द थिंग व्हिच इज इनसाइड इट इज मोर और लेस कम्स फॉर सिमेट्रिक केसेस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, ठीक है। So we have to factor in जो when we take velocities comparable, तो क्या आएगा? Only exception is the ठीक है। And finally there is a question of angular distribution of charge from a rapidly moving charge. So again, if you remember हमने कहा था ना कि जो ये है masses के लिए जो center of mass है ना, it's exactly at center, but when particles move at higher velocities, उनका mass change हो जाता है, उस हिसाब से center of mass doesn't fix that center which is defined in the classical sense. Since we are going in relativistic cases, those जो center of mass या center of mass अब यहाँ नहीं है, we have center of charge का कहाँ center आएगा, that also fluctuates, ठीक है। उसी हिसाब से ये है जो है ना रेडिएशन कैसे how we have to calculate this direction that also। अब ये कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि
it's convenient to use linear expressions in this 60. If you remember, एक बार मैंने 63.8 आपने किया था उस सेकंड ऑर्डर टर्म, मैंने कहा था कि कैसे एक्सरसाइज करना, हमने ये किया था. That knowledge comes back 63.8. हाँ, इसमें हमने ये निकाला था फ्रॉम दिस, एक मैंने होमवर्क रखा था, अगर नहीं याद है अगेन यू कैन एटलीस्ट सी इट. तो हमने वहाँ पर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लीनियर ऐसे निकाला था बाय सी और डॉट बी बाय सी, पहली वाली टर्म निकाली और माइनस बी बाय सी. इसी तरह दूसरी वाली टर्म निकाली थी ऐसे बी बाय सी स्क्वायर और माइनस और डॉट बी बाय थ्री और क्रॉस और माइनस बी बाय आर क्रॉस dot will h equal. So this how when the particles move at higher velocities, this knowledge will come out जो हमारी रिचर्ड पोटेंशियल से हम कैसे डिफाइन करते हैं स्टार्ट में. तो दिस कम्स आउट हैंडी. और यहाँ पर हमने जस्ट डिफाइन और ये ऐसे हमने डिफाइन किया. ये नॉलेज करते हुए we can use this knowledge from previous our defined linear potentials to address this problem. When particles move at higher velocities, उनका angular momentum fix नहीं होता है. एक जगह center of mass fix नहीं होता है, या center of mass जहाँ से charge हम लेंगे, charge कहाँ से, field कहाँ से originate होता है. Field normally originate होता है charge, where the charge is located, and where the charge is located, the field at that point is maximum, है ना? Where there are different potential, है ना? Property आती है ना? Example close to at point charge का field होता है at its origin maximum, ठीक है? अब वो ये कि जो field की वजह से जो charge होगा, है ना? At higher velocities, इसका वो एक जगह बहुत सारी charge या दो charge होंगे dipole की. अगर दो चार्ज होंगे तो नेट फील्ड निकालना होगा ना, कहाँ पर होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा. एक चार्ज के लिए तो ठीक है, पर वो इंटरेस्टिंग है डायपोल. डायपोल में दो चार्ज का फील्ड कहाँ मैक्सिमम मिनिमम होगा. अगर ये सिमेट्रिकल चार्ज रहेगा तो सेंटर पर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, जो प्रॉब्लम करते हैं. बट इट्स मूविंग एट हायर वेलोसिटीज, तो इस वजह से वो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन ये लीनियर पोटेंशियल की फर्स्ट ऑर्डर टर्म में क्या होगा and second order term में, ठीक है. अब ये क्या है, at large distances we must retain only terms of flow. We must retain only the terms of lowest order in 1/r. अब ये करेंगे हम कैसे करेंगे. तो अगर हम टर्म्स ऑफ लोएस्ट ऑर्डर लेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम अभी डी है ना, ये डी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा ई नहीं रहेगा, ई आएगा. ई का वैल्यू क्या आएगा, तो ई का वैल्यू हम दिस term and what we have to calculate terms of from this and cross. अब इसमें थोड़ा सा इसने चेंज किया है, n minus b by c cross of w 1 minus n dot by c. R is represented as nr.
and T prime is this is the potential T minus R plus and H is equal to अब ये चीजें हम सब्स्टिट्यूट here R के बदले N R लिखेंगे N बाहर कर लेंगे ठीक है and so you write this equation these proper substitutions you can also write that first like this अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो now we are to हम intensity को if you remember intensity of the radiation जो अभी हमने इस क्लास से और इस क्लास से पहले intensity और energy में relation कैसे निकाला वो square of energy is proportional to the intensity square of intensity so you have to square this entire expression square this entire expression okay इसका पूरी का square आएगा इसकी फॉर्मूला हमारे पास कौन सी है फॉर्मूला है bi जो हमने निकाली था c by 4 by e square all square and this solid intensity is proportional to अब अगर इंटेंसिटी निकालनी है और हम क्या निकाल रहे हैं और डायपोल है एंड फर्स्ट ऑर्डर टर्म फर्स्ट वो कैसे विच विल अकाउंट फॉर दिस वी आर टेकिंग इसका स्क्वायर मीटर पोटेंशियल की पहली वाली टर्म अब एक्सपेंडिंग अगेन ई स्क्वायर विल गेट डी आर इज इक्वल टू जाएगा ना ई स्क्वायर आएगा ये C4 आएगा C4 एक आएगा एक अंदर से C फिर से निकलना है तो वो C जाएगा I'm getting expanding this. So if we expand this, इसकी first term भी आएगा, second term भी आएगा, third term भी आएगा. It's another job how we can expand this. आप घर पर रख दीजिए, ठीक है? ये आधे घंटे की काम है, 15-20 मिनट में आप फंस जाओगे 2-3 बार, ठीक है? It's not as आसान तो है, उतना आसान नहीं. तो अब at least I'm going to straight away write this. Square है C4 है यहाँ से C2 है. You can write this thing also. Write this. Taking different powers, different expanding, you get. Unfortunately, you have to convince yourself that I can or you can or he can or she can write this thing as this. अभी मैं अपनी जगह कन्विंस नहीं हूँ, ठीक है? आप ऐसे मत करना, ठीक है? अब यहाँ से जाके करना, you just go and convince not me, convince your own self. हाँ, यहाँ से भी कैसे यहाँ आ गए, ठीक है? That is a job of उनको बुक लिखने का काम क्या है? इसमें बहुत सारी है ना? He has done lot of steps, he has missed. That's an exercise to do. At least you should. एक तो हो गया आपका algebra इसका होना चाहिए. दूसरा है कि how you can relate algebra with the concept. दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए. Algebra as well as and at the end क्या कह रहा है? What is the story? Over the sum of what? And if it is this, and again this thing. Now we can also do this thing. Previous when you derive linear potential, so ऐसे करेंगे. इसमें आप क्या करेंगे हम ये है ना ये first order first correction में 5 power है. ये sorry 5 4th power ये 6 power है ना.
order in the expansion. और ये तो इंटेंसिटी है, या in terms of energy अगर आप देखोगे, in terms of energy solid, this is intensity. Or if you want to see in terms of energy, 63.6. 63.6. So if we have to find again, we have to find अगर इसी का expression because of solid angle लेंगे, ये वाला तो इसको भी अगर आप expand करोगे in terms of this, तो यहाँ न्यूमरेटर में आएगा ऐसे, पहली वाली टर्म आएगी v डॉट n, दूसरी यहाँ 4 आता, सेकंड टर्म आएंगे ऑन राइट डिनोमिनेटर में ऐसे आ रहा है, एंड थर्ड वाली टर्म आएंगे अब ये है नाउ द लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज, लॉजिक ये है कि in general case the angular distribution of radiation quite complicated, generally it's very complicated, ठीक है. What we are going to do, we are going to take 1 minus v by c, which is related to the presence of hash powers of difference of 1 minus. अब हम क्या करेंगे, इस तरह हमने डार्विन टर्म में ली ना, सेकंड ऑर्डर टर्म तक करेक्शन लिया, ठीक है. अब यहाँ we are going to mimic this case, 1 minus v by c is very less than c. इसको हम लेंगे फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स कोऑर्डिनेशन एक्सप्रेशन. अब ये फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स का मतलब ये है कि इसको ये बेसिकली कह रहा है, what he wants to say basically, we can also write this 1 minus, we can first few orders जो है इसका difference can also be written as this. इसका मतलब ये है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल एंड इट इज डिनोटेड बाय एंगल थीटा, तो इसका मतलब ये है कि ये है ना, अगर जो मैं कहता था सिमेट्रिकल डायपोल होगा तो इट विल बी 0, बट जो फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स ऑफ करेक्शन होंगे डायपोल की, ठीक है, दोज आर ड्यू टू जो डायपोल एक होगा उसका slant होगा at some angle, ठीक है, with regard to the source charge, ठीक है, which is rapidly moving, and that is taken into consideration by ये 1 minus bc, 1 minus b by c cos theta है, इसको ये approximately defines it like this, plus or we can also write it as some relativistic expression in higher order. It's not like this, but we can for approximates, the approximation at velocity of charge, normal charge by linear, but it's at some angle theta with regard to source charge. Okay, that is represented by this. Okay. So ये factor can also be represented in terms of approximation like this. Such that theta का it will be जो relativistic factor है ना हमारे पास बीच में, तो theta can also be approximated like this. Okay, it's not in exact sense, but from this logic we can just extend it for approximations. तो हमारी it will become have a semblance of when we take normal relativistic correction, वहाँ v minus v square by c square minus 1 by half लिखते हैं, 1 by 2 लिखते हैं, 1 by 4, 2 factorial, 3 factorial, ठीक है. So it will have semblance of that first term in the expansion. Thus, so I will write the word. Thus, electro, what I'm using the words of book, other ultra relativistic
particle radiates mainly in the direction of its own motion. यहाँ से ये एक्स कर रहा है within a small range ये वाला है, ये वाला small range ये है, small range is this of angles around the direction of the velocity, of angles around the direction of जहाँ ABC का ये है। अब ये है कि ये है थीटा b by c, बेसिकली ये n डॉट b है। अगर आप इफ यू रिमेंबर यहाँ पर है n डॉट w, n डॉट b है। अब ये है कि v cos थीटा है, ये होगा फील्ड, ये फील्ड होगा, ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। cos 0 is 1, cos 90 is equal to 0, या इस तरह sin 0। अब मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट में फ्लक्चुएट फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम टू सेम में भी हैपन टू ई फील्ड। तो इसके दो एंटीपोडल पॉइंट्स आएंगे, दो पॉइंट्स आएंगे वेयर फील्ड विल बी मैक्सिमम एंड फील्ड विल बी ऐसे, है ना, मैक्सिमम एंड then again it will go maximum. So in the same way, with regard to these angles, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा it will reduce to special cases. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर टर्म भी लेंगे, तो अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड में ये राइटिंग डायपोल की एक्सेलरेशन, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन ये मैग्नेटिक फील्ड है H, इसकी इंटेंसिटी है, इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये इसका स्क्वायर आएगा 36 आएगा, ठीक है, ये 4 आएगा। हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 5। एंड इन केस ऑफ अदर केसेस, अगर हम सॉलिड एंगल को भी इंक्लूड करेंगे, है ना, वहाँ सॉलिड एंगल का क्या है, r sin थीटा d थीटा d phi, तो इट विल आल्सो वेरी। तो फिर अगर हम टोटल वॉल्यूम में कितना इंटेंसिटी निकलेगा, तो यू हैव टू टेक इनटू दैट थिंग आल्सो कंसीडरेशन। फिर थीटा एंड फाई एंगल का भी लेंगे, कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी फिर जो मैक्सिमम एंड मिनिमम कैसे आएगा, यू हैव टू मैक्सिमम एंड टू मिनिमम, ठीक है। इफ यू टेक ई फील्ड्स एंड बी फील्ड्स बोथ इनटू कंसीडरेशन। थोड़ा सा ये समझना, ये इमेजिन करना, थोड़ा यू आर बेसिकली ट्राइंग टू इमेजिन ए रियलिस्टिक सिचुएशन। रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम देख रहे हैं ना, ये प्रोड्यूस हो रही है डायपोल्स, ठीक है, एक्सेलरेटिंग डायपोल्स। एंड एक्सेलरेटिंग डायपोल में अभी हमारा आज का क्लास का केस था रैपिडली मूविंग चार्ज। एक चार्ज नॉर्मली मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेटिंग डायपोल विल नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूनिफॉर्मली मूव, इट शुड एक्सेलरेट। अभी रैपिडली कोई चीज एक्सेलरेट कर रहा है, रैपिडली कर रहा है, एक्सेलरेट टू द कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ सी। और नॉर्मल एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे भी प्रोड्यूस होता है, पर कह रहा है रैपिडली एक्सेलरेटिंग, वही बुक में कह रहा है। सो अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक, तो नॉर्मली वहाँ हम वो अल्ट्रा रिलेटिव नॉर्मली v by c को हम कम लेते हैं, या फर्स्ट टू टर्म्स लेते हैं। इसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर टर्म का लिया फ्रॉम लीनियर चार्ज पोटेंशियल, एंड जो n डॉट b का फैक्टर भी लिया, ये बेसिकली ओरिएंटेशन दिखा रहा है। दिस लॉजिक को यूज करते करते we arrived at this expression of intensity and having previous knowledge of intensity और energy का क्या रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक चीज है कि ये स्टेप है ना, you just इक्वेशन 17.39 73.6 और 73.9, इसको मैंने इवैल्यूएट, इसका आपको एज अ होमवर्क है, यू ट्राई टू सी इसका लॉजिक फ्रॉम
स्टेप ए टू स्टेप बी, ठीक है। इसने एक से दूसरे कैसे बनाया ये रह रहे हैं, बाकी इट वाज क्लियर, ठीक है। अभी हमारा आप सिर्फ 4-5 क्लास रह रहे हैं, तो यू आर